Now the structure of dicot stem, anatomical features of dicot stem. Again, we are going to learn which section, longitudinal, transverse, right? First, we have completed dicot root and monocot root. First, understand. And now we are going to start with the stem sections. That is the first dicot stem. Now, dicot stem, in that the outermost layer, right? Outermost layer that we call, again same like a root, epidermis, made up of parenchyma, barrel shape, single layer, no intercellular spaces, same like a root. But one more extra feature is added. That is, this is what green color layer here, cuticle. Now the cuticle is present, because imagine the stem, right? So stem है, if on stem आउटर मोस्ट लेयर, आपको जो बाहर से स्टेम का लेयर दिखता है ना, आउटर मोस्ट लेयर, इफ स्टेम डज नॉट हैव दैट क्यूटिकल on that epidermis, does not have cuticle, what happen? जैसे इनसाइड आता है वैसे आउटसाइड भी तो जा सकता है ना? So to avoid transpiration or evaporation, right here, which one, transpiration or evaporation, to avoid the water loss, simply this cuticle layer present on the stem of epidermis, right? Next, after that, on this cuticle तो है ही, हमने रूट में क्या किया था, और एक लर्न रूट हेयर, इफ यू कैन रिकॉल, विच वन, रूट हेयर, स्टॉप. Next is a which one here in case of the stem, that is stem hairs are there, and stem hairs, if you can make out over here, this is a single cell from which the stem hair is formed. So it's a unicellular or multicellular? Stem hairs are multicellular, yes or no? समझ में आ रहा है? Now, and stem hair के दो functions right now. One of the function, stem hair को हम trichomes भी बोलते हैं, है ना? And one of the function is their secretory. Secretory secrete chemicals. Its simplest example, that's नीम का ले लो, या फिर that's a पुदीना, right? पुदीना का stem, पुदीना नियर बाय होता है तो भी स्मेल से पता कर पाते हो, है ना? आइज क्लोज रख के भी पूछो ये कौन सा प्लांट, तो भी स्मेल से पता. तो वो जो सर्टेन, नॉट इन ऑल प्लांट्स, इन सर्टेन प्लांट्स ट्राइकोम शोज द फंक्शन ऑफ व्हाट, सिक्रीशन. वो सिक्रीट करता है दिस एरोमेटिक मींस अरोमा कंपाउंड. नेक्स्ट वन, सेकंड इज अ, see, one is a this way, the single cell here, but now the trichomes are there, then multicellular condition, so now much more cuticle. एक इतना cuticle यूज हो रहा था, now much more cuticle. So trichomes if present, जैसे root hairs present थे तो much more water absorption, so trichomes present है तो it avoids water loss much more, right? Trichome वो भी तो सरफेस एरिया स्टेम का ही इंक्रीज कर रहा है ना, जितना सरफेस एरिया स्टेम का इंक्रीज हो रहा है उतना क्या हो रहा है, क्यूटिकल लेयर, वाटर दैट्स अ लॉस दैट विल बी रिड्यूस्ड हियर. अंडरस्टूड? नेक्स्ट टू दैट इज दी, can you tell me, this is epidermal tissue system, vascular, and between them which tissue system? Ground tissue system. Ground tissue system, another name is a fundamental tissue system. So ground tissue system, in that starts with here one, this layer, right, which is absent in case of root, dicot or monocot. Here the which layer is present? First hypodermis, then cortex, this is cortex, and then endodermis, right? Root में क्या था, सीधा cortex, endodermis. Here one more layer is there, that is hypodermis. Multi-layer है, which is here the deposition, पहले तो which is made up of what, cholenchyma, and deposition of pectin is there at angular position. Cholenchyma is a living or dead tissue? Living, because deposition at occur only angular, right? बाकी के साइड से तो अभी भी क्या है, एक्सचेंज होता है, right? Next one, so cholenchyma generally that gives flexibility. Remember, cholenchyma gives what? Flexibility, right? Next one, after that here that's the cortex is there. Cortex made up of parenchyma, innermost layer of the, and that is parenchyma, loosely or tightly arranged. Intercellular species are here, intercellular species are, because deposition किसका हो गया, pectin. Next, innermost layer of cortex we call endodermis. Endodermis here, that's a unique feature. Root में unique feature क्या था?
हाँ, सुबेरिन वाला क्या? Casparian strip is there. If Casparian strip in root, sorry, Casparian strip in endodermis, then roots. But if here in case of this, that's into the endodermis, the starch grains are stored. Plant का stored food क्या है? Here starch grains are accumulated. Here starch grains are accumulated, stored, right, as a reserve food material in endodermis. So in endodermis we can able to see what? Starch sheath, understood, that is, see, endodermis, parenchyma, barrel shape, tightly arranged, but here this endodermis, in that already water तो आ गया, root के endodermis से yes or no, passage cells. Now here not for the same role कि water थोड़ी आने वाला है यहाँ से, yes or no. Now it's a stem, so here that the starch sheath is present. Clear? So starch sheath in endodermis is the unique feature of dicot stem. Inner to this, that's the endodermis. Next layer is a pericycle. When you see dicot root, monocot root, in both of them pericycle in a ring arrangement. Pericycle in a ring arrangement. But here the pericycle present in a which form? Patches. In this portion pericycle present, then absent, then this one. Clear? So pericycle present over here in a which form? Patches form. And that is also made up of what? Sclerenchyma, which is a dead tissue. Dead tissues का रोल क्या होगा? यहाँ पे dead tissues से क्या मिलेगा? Mechanical support. Dead tissues provide what? Mechanical support. समझ में आ रहा है? ये पेन लिविंग है या डेड है? बट स्ट्रॉन्ग है? Yes or no? Support. Mechanical support. Dead tissues से वो strong बनते हैं. Understood? You know it's simplest. जब भी किसी पर्सन का ऑर्गेनिज्म का डेथ होता है तो दैट बॉडी becomes stiff. पता है? Within few hours actually. तो जैसे ही डेथ होता है उसकी बॉडी को पहले बॉडी पार्ट्स को सीधा करता है. Yes or no? So remember डेथ है तो वो stiff हो जाते हैं. Provides mechanical support. Understood this? Next one. After that, that is the inner to that pericycle. Vascular bundles are there. Vascular bundle में towards the pericycle कौन आएगा? Phloem. Which one? Phloem. Inner to the phloem, vascular cambium. Inner to the cambium, xylem. Right? Phloem, cambium, xylem. And then center में यहाँ पे क्या बनेगा? Pith, parenchymatous. Now, जहां पे पेरिसाइकल है, ओवर देयर जहां पे पेरिसाइकल, राइट, हियर जस्ट बिलो दैट फ्लोएम, वैस्कुलर कैम्बियम एंड जाइलम. नेक्स्ट, तो ये वैस्कुलर बंडल्स को प्रोटेक्शन दे रहा है, स्ट्रेंथ दे रहा है. नेक्स्ट इज अ विच वन ओवर हियर, बिटवीन टू एडजेसेंट वैस्कुलर बंडल, राइट. नॉट ओनली दिस मच, सो मेनी वैस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट हियर. वो रूट के जैसा नहीं है, 4 या 6 लाइक दैट, राइट. So between vascular bundles, here elongated parenchyma are present, and this elongated parenchyma we call medullary rays. ये स्ट्रक्चर को क्या नेम दिया है? Medullary rays. समझ में आया फर्स्ट स्ट्रक्चर? That is which one? Medullary rays. Once that parenchyma reach to the center, it becomes again circular. The center part we call what? Pith. Right? Next. Here, this is the periphery, yes or no? ये periphery होगा या center? Periphery. And this should be the what? Center. Pith जहां पे होता है वो क्या होता है? Center. Yes or no? आपको ऐसे अंडरस्टैंड करना है. Xylem है तो यहाँ पे मेटाजाइलम होगा एंड यहाँ पे क्या होगा? प्रोटोजाइलम. समझ में आ रहा है? Towards the pith हमने ड्रॉ किया है प्रोटोजाइलम. So towards the pith protoxylem है, so that is which condition? Enlarged condition. Which one? Enlarged condition is there, right? Here radial होगा? नहीं. Now this xylem and phloem एक ही axis पे है? Yes or no? So that is conjoined. Conjoined type of vascular bundle. Conjoined में भी हमने सब type किया था. Conjoined collateral. Remember, conjoined collateral. कोलेटरल में भी हमने उसके फर्दर सब टाइप. ओपन है या क्लोज्ड? ओपन. हाउ कैन यू से दैट ओपन? वेरी गुड. वैस्कुलर कैम्बियम इज
present that allows the secondary growth. Cambium जहां पे होगा वहां पे secondary growth possible, otherwise not. Clear? So first epidermis, here that's a vascular, between them that is ground tissue system. Ground tissue system में कौन से parts को describe करोगे? First hypodermis, second endodermis, cortex, second cortex, then medullary rays. क्या है? Repeat. And last में pit. This all part constitutes ground tissue. Epidermis already done, ground tissue done. अभी बाकी सिर्फ क्या रहा? Vascular. Vascular tissues को ये 4 terms में आपको explain करना है. Clear? Enlarged, conjoined, collateral and open. Understood this thing? Yes or no? See, stem है तो stem क्या always सीधा ही होता है? उसकी branches भी होते हैं. Branches भी है ना, right? तो stem में always remember this thing that this medullary rays are there that provides radial conduction of water. See this one, ये side पे जा रहा है? Yes or no? Root के xylem से stem के xylem के पास water आएगा. Yes, समझ में आ रहा है? Root के xylem से stem के xylem to which one? Medullary rays. फिर यहाँ पे मेड्यूलरी वेस्ट जहाँ पे है इजीली वाटर ट्रांसपोर्ट हो सकता है कि नहीं? यस और नो? यहाँ पे रिवर्स जाना है. रूट में क्या था? आउटसाइड टू इनसाइड, राइट? ये स्टेम है, स्टेम में जाइलम वाटर प्रोवाइड करेगा टू ऑल द सेल्स. अंडरस्टूड दिस, राइट? सोचिए अगर यहाँ पे भी वो पेरिसाइकल बन जाता तो क्या होता? पेरिसाइकल इज अ नहीं, पेरिसाइकल इज मेड अप ऑफ sclerenchyma, which is allow the translocation. No, that's why logically here that medullary rays are present but not the pericycle. समझ में आया? Yes or no? Anyone have a doubt? Sure?